Bismillah Rahman Rahim. A warm welcome to you all. It's an honor and privilege to address you all at the third Pakistan Climate Conference. I would like to extend my heartfelt gratitude to the members of the Overseas Investor Chamber of Commerce and Industry Managing Committee, as well as the esteemed representatives from the corporate sector for their active participation on this vital dialogue. Our presence here reflects a shared commitment to tackle one of the most pressing challenges of our time, climate change. Ladies and gentlemen, climate change is not a distant phenomenon. It's a reality that affects us all. For Pakistan, it presents an existential challenge. Our country ranks as the fifth most vulnerable nation to climate change, facing rising temperatures and increasing frequent and severe weather events. Since the 1960s, the average annual temperature in Pakistan has increased by approximately 0.5 degrees Celsius. If we fail to act decisively, projections indicate a further increase of 1.3 to 1.5 degrees Celsius by 2050. These are not just numbers, they are stark reminders of the challenges we face. Sindh is a frontline province and particularly vulnerable to the impacts of climate change. Rising temperatures, extreme weather events such as heat waves and floods, and most looming threat of sea level rise pose severe risks to our people, economy and environment. We're just talking about the 2022 floods. Mr. Amir was mentioning those floods and said whether we are ready for another 2022. I'm afraid we are not. I don't think any country of the world is ready for such an event, which the UN Secretary General had called a disaster of biblical proportions. And when he visited here and when he saw the entire province, two-thirds of the province underwater, his remarks were that this is a monsoon on steroids. So, as I said, we were not responsible for it, but our people faced the brunt, the government of that time, and we all stood with our people. And I'm grateful to all the international community, to the locals here who'd helped. And we have been able to rehabilitate the people, because during those floods, apart from the immediate damage done to the agriculture, the lost lives, the damage to livestock, the major damage was the total destruction of almost 2 million houses in the flood-affected areas. These 2 million houses represented about 12 million people. And the government of Sindh launched a program immediately. Actually, we launched that program while the flood water was still there. And our objective was to provide housing to these 12 to 15 million affectees. Housing so that, God forbid, as we said, are we ready for the next one? To be at least prepared for the next one. And the housing is such that, inshallah, and out of the 2 million, more than 800,000 are currently being built. We've got financing for the entire 2 million houses, and the process is ongoing. And what we're doing is building them a very modest one-room house. The objective is that, God forbid, if we are faced with another catastrophe like this, we do not have to move these people out of their houses. They remain there because floods, the effects of floods, initially it's like 2 to 3 weeks before the water recedes back. But if you lose your house, it's a lifetime disaster for you. So what we want to do is make sure that these people who were affected by the flood, and we'll extend this to the entire province, and that's what our plan is. Even areas which were not affected by floods but may be affected by some other natural disaster later on, we plan to provide them with housing. The other issue that was raised, and I was just listening to the chat that was being done here today,
We've, in the province of Sindh, and this is not new, we started about 10 years ago. It took a lot of learning for us to do, but we were able, and we are able to, and we started on that, to earn carbon credits for the government of Sindh. And the mangrove plantation that we've done in our districts of Sijawal, Thatta, even Karachi district has potential for mangrove plantation. We have so far earned about $15 million on carbon credits, and we've gone through the entire process of getting it verified through gold standard or whether, I'm not an expert in this, but we've done that, and inshallah, we have led the country, and you're absolutely right. The potential in Pakistan to either mangroves of Sindh, the forests in the north, to earn carbon credits, and for our companies here to, instead of buying these carbon credits abroad, they can just fund their own countries and buy these carbon credits. The government of Sindh is currently doing a project in public-private partnership for forestation, and the revenue model is to earn credits through, to earn carbon credits. And I'd invite the corporates here to please look into that. And it's under preparation. It's almost ready. We've been working on it for some time, and we'll be ready to launch it. And I'd request the corporate sector to actively participate in reducing the carbon footprint and at the same time investing in our country. The World Bank has estimated a potential of 18 to 20% loss in GDP for Pakistan by 2050 due to impact of climate change. This alarming figure underscores the urgency of collective action. However, within these challenges lies an opportunity to build a more resilient and sustainable future. And as I said, this is what we're working on. Apart from our housing project, our forestation projects that I talked about, we talked about solar energy. Again, the government of Sindh is undertaking in public-private partnership and through its own PSDP, through its own annual development program, a huge, this current year, we've allocated 10 billion rupees for providing solar energy to the people, and that program has started. We started with solar rooftop for for homes. Apart from that, we have solarized some of our government institutions, the Dow Medical Campus at Oja, I'd gone there myself, the Central Jail Karachi has been solarized. We actually started on this a very long time back, about 10 years ago. We solarized all the schools in District Tharparkar because they were too far away, too scattered for the grid to get to them, so we solarized them. Another statement that we made, again, this was now 10 or 12 years ago, and we worked, this is when we started and we've developed that further. 2 villages in District Sangar, in Tehsil Khipro, which were bordering which were on the Indian border. The local representative there told us that when they visited, कह रहे उर्दू में बात करो, लाइव जाना है हमें। जब हमने 10-12 साल पहले वहाँ विजिट किया तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो उन्होंने कहा कि जी ये गांव वाले जो बॉर्डर पे लाइट्स हैं इंडिया की, उससे रात को रोशनी देते हैं और खाना बनाते हैं। हमने उसको एक चैलेंज समझ के रखा, और वो 2 जो विलेजेस हैं बॉर्डर पे, ये लाइक हाफ a किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर, उन दोनों को हमने सोलराइज किया और वो आज तक रहे। उसके बाद हमने कई हज़ार सोलर प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स हैविंग अ क्लीनर एनवायरनमेंट। और यही हमारा फोकस है, यही हमारी पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का फोकस है कि हम सोलराइज करें। जैसे मैंने कहा, इस साल हमने 10 अरब रुपए रखे हैं, हम सोलर रूफटॉप्स दे रहे हैं। एक हमारा पुराना प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक की एक लोन के साथ चल रहा है,
जो कि ऑलरेडी रोल्ड आउट है, ये दूसरा प्रोग्राम जो सिंध गवर्नमेंट का है वो भी इन प्रोसेस है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, हमने, मुझे नंबर इस वक्त याद नहीं, 33 या 35 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी अस्पताल, जेल्स, बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स जिनको हमने सोलराइज़ किया है। और उसके अलावा हम 3 सोलर पार्क्स, 2 कराची के साथ, 1 मांझन में, अगेन इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना रहे हैं, जहाँ पे हम ज़मीन दे रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और वहाँ पे सोलर पार्क्स लगाएं ताकि हम लोकली वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ जानते हैं, पता है कि नेशनल ग्रिड में इस वक्त हमसे कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज ऑफ व्हाट दे से इसके वी गॉट एक्सेस एनर्जी। आई डोंट थिंक वी गॉट एक्सेस एनर्जी। मैं पहले जगह ये कह चुका हूँ, वी गॉट अ वेरी लो कंजम्पशन पर कैपिटा, और हमने अपनी कंजम्पशन बढ़ानी है सो दैट हम एनर्जी प्राइसेस को भी नीचे ला सकें, और हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। हम अगर थरपारकर में कोल से एनर्जी पैदा करें तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम इस वक्त तक तकरीबन 2000 मेगावाट विंड एनर्जी के जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम जम्पीर कॉरिडोर। तो हम वी हैव इन माइंड जो इश्यूज हैं और हम उन पे काम कर रहे हैं। हम अभी मैं 1-2 स्टॉल्स विजिट किए थे। हम पानी, अगेन इट इज़ ऑलरेडी वी गॉट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। हमें पानी के लिए हमारी सिंध गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स थी जो हमने वही 10-12 साल पहले शुरू की थी कि हमने नहरों को लाइन करना है, पक्का करना है। और हम पूरे, जब हमने शुरू किया था तो बड़ी एक जो फार्मर्स थे ना, उनकी तरफ से आते थे कि पता नहीं हमारा पानी इसके बाद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इस वक्त हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो लोकल फार्मिंग कम्युनिटी से होती है वो कि हमें अपनी नहर लाइन करके दें, इसलिए कि उससे जो उनको पानी ज़्यादा मिला है पहले से लाइनिंग के बाद, और वो ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अच्छी इरिगेशन प्रैक्टिसेस मैंने बाहर देखा था, नेस्ले का आई बिलीव वो ड्रिप इरिगेशन पे काम कर रहे हैं, और मैंने उनसे ही पूछा था कि हमने कुछ अर्सा पहले, कुछ सालों पहले ट्राई किया था। हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो इंपोर्ट कर रहे थे, हमारा दरिया सिंध का पानी, उसमें सिल्ट कंटेंट ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से हो ये रहा था कि वो जो नोजल्स हैं वो सारे ब्लॉक हो जाते थे, और हमसे लोगों ने लेना छोड़ दिए वो जो हमने बनाए थे। तो हमने कहा कि लेकिन वे फॉरवर्ड इज़ टू कंजर्व वाटर। हमने ये ड्रिप इरिगेशन पे काम करना है, और हम इस पे काम करते रहेंगे। बल्कि मुझे कि नेस्ले हमारे साथ इस पे ऑलरेडी काम कर रहा है। हमारे पास कोस्टल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो कोस्ट की, हमारे इंडस डेल्टा की प्रिजर्वेशन के लिए काम करता है। हम बहुत बड़े एडवोकेट्स हैं जो सी वाटर इंट्रूजन है, और जिसकी वजह से हम अपनी कीमती ज़मीन, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, समंदर का लेवल बढ़ने से हम अपनी कीमती ज़मीन ज़ाया कर रहे हैं। उसके हम बहुत बड़े प्रोपोनेंट्स हैं कि एक दरियाओं का पानी की कम से कम, हमारा तो ख्याल है और ज़्यादा, लेकिन जो वाटर रिकॉर्ड 91 में हुआ था उसमें ख्याल था 10 मिलियन एकड़ फीट। बाद में वो एक्सपर्ट्स कमेटी ने 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी कहा है कि डाउनस्ट्रीम कोटड़ी जाना चाहिए ताकि डेल्टा आपका ज़िंदा रहे, वहाँ की इकोलॉजी सही हो। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी जब फ्लड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी आता है, जब किसी को ज़रूरत नहीं होती तो सब इधर भेज देते हैं, अदरवाइज़ वो डेल्टा हमारा प्यासा रहता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। हम उसके लिए भी स्ट्राइव कर रहे हैं कि हमें एडुकेट एलोकेशन मिले फॉर द डेल्टा। उसके अलावा ज़मीन बचाने के लिए सिंध गवर्नमेंट एक फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फंडिंग वहाँ से कुछ आ रही है। हम कोस्टल हाईवे बनाना चाह रहे हैं ताकि हम डाइक बनाएं टू प्रोटेक्ट सी वाटर, टू प्रोटेक्ट आवर लैंड्स फ्रॉम सी वाटर इंट्रूजन। जैसे मैंने आपको बताया है अभी कि हम अपार्ट फ्रॉम मैंग्रोव्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए भी
10,000 एकड़ का एक फॉरेस्ट ब्लॉक की जो हमने किया हुआ, हम उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट इज वर्किंग ऑन इट. तो टू जस्ट समराइज, हुकूमत सिंध बिल्कुल अवेयर है विद द डेंजर्स दैट क्लाइमेट चेंज इज ब्रिंगिंग टू अस. ये कोई फ्यूचरिस्टिक बात नहीं, ये वो बात नहीं कि आपकी चॉइस है. पहले आप समझते थे, आज से 10, 15, 20 साल पहले समझते थे कि ये क्लाइमेट की बात वो करें सिर्फ जिनके अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है. लेकिन अब सब रियलाइज़ करें कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, और अगर आपने इसकी तैयारी नहीं की तो आपकी बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी. द गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस. हमने जैसे बताया कि इस पे वेरियस सेक्टर्स में, चाहे वो पानी की बचत हो, चाहे सोलराइजेशन हो, चाहे फॉरेस्टेशन हो, इन पे काम कर रहे हैं. मैं यही चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर भी हमारे साथ मिलकर, और हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट है जो ये करते हैं, वो हमारे साथ मिलकर काम करे. मैं OICCI की मैनेजमेंट कमेटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया, और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने मेंबर्स से भी ये दरख्वास्त करें जो अपना CSR लगाते हैं, या मैं तो ये कहूँगा इन्वेस्टमेंट्स अपनी इन्वायरमेंट के सेक्टर में पाकिस्तान में लगाएं. पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है. हम जब गए थे आफ्टर द 2022 फ्लड्स, UN ने जिनीवा में कॉन्फ्रेंस की थी, तो वहाँ पे उन सारों का ये हम गए थे ऑब्वियसली दुनिया से मदद मांगने, लेकिन वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, मदद हम उसकी करेंगे जो अपनी मदद खुद करेगा. और उधर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जितना दुनिया कमिट करेगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट उतना ही कमिट करेगी. और हमने फॉर एग्जांपल इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में हुकूमत सिंध ने खुद अपना पैसा डाला है, फेडरेशन ने अब पैसा डाला है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उनकी तरफ से भी पैसा आया है. तो हमने मिलके इस थ्रेट से मुकाबला करना है. और इंशाल्लाह ताला मैंने फ्लड्स में देखा था कि हमारी कौम बड़ी रिजिलियंट है. मैं आपको फ्लड्स का बताता हूँ किस्सा कि जब मैं एक चक्कर पूरा मार के वापस कराची आया था तो आई वाज फीलिंग हेल्पलेस. जिस मिकदार में, जिस तादाद में वो फ्लड का पानी आया था, मैंने कहा कि इधर कुछ हम कर ही नहीं सकते. मैं 1 या 2 दिन आई जस्ट सॉर्ट ऑफ रिकलेक्टेड माई सेल्फ. और मैंने जब दूसरी बार गया तो मुझे लोगों ने हिम्मत दिलाई कि इन एडवर्स कंडीशंस में भी वो लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे थे. तो हमने कहा कि नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनके साथ खड़े रहें इस मुश्किल वक्त में. और मुझे ये खुशी है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत लोगों के साथ खड़ी रही थी, एंड वी सरमाउंटेड दैट प्रॉब्लम. मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ OICCI की मैनेजमेंट कमेटी का मुझे इधर बुलाया. wanted to spend more time here, but unfortunately the day today such a day that I have overcommitted myself and number of events. मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इधर बुलाया, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत सिंध अपना पूरा किरदार अदा करेगी इस थ्रेट को फेस करने के लिए. और इंशाल्लाह ताला टुगेदर we the people of Pakistan will overcome these threats which are not our doing. They have been brought on to us, but we have to fight them, and inshallah we will. Thank you very much. Pakistan Zindabad.